Let's start with the new PPT of machine learning. ठीक है, K मीन्स क्लस्टरिंग है PPT. K मीन्स क्लस्टरिंग तो अपने को पता है. बस अभी अपन को देखने की what all द PPT has to offer. छोटा PPT है, 33 स्लाइड्स ही है, फटफट हो जाएगा. My goal is to get it done within 15 minutes. But देखते हैं if it takes 20, 25, whatever. Introduction. What is clustering? Clustering is the classification of objects into different groups. क्लस्टरिंग क्या करता है, अपन क्लासीफाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और मोर प्रिसाइसली द पार्टीशनिंग ऑफ डेटा सेट्स इनटू सबसेट्स, सो दैट ईच डेटा इन ईच सबसेट आइडली शेयर्स सम कॉमन ट्रेट, ऑफन अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड डिस्टेंस मेजर. क्लस्टरिंग आया, जैसे ही क्लस्टरिंग आया ना दिमाग में, यू नीड टू हैव दिस ग्राफ इन योर हेड. ठीक है, व्हाट डज द ग्राफ से, व्हाट डज द ग्राफ लुक लाइक. ग्राफ कुछ ऐसा है. ठीक है, क्लस्टरिंग क्या कर रहा है ना, तुम्हारे क्लस्टर्स कैसे दिखते हैं. पहले इफ दिस इज योर क्लस्टर एंड देर इज वन मोर क्लस्टर, एंड यू हैव अनदर क्लस्टर. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्लस्टरिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. डिफरेंट ग्रुप्स तो अपने फॉर्म हो गए, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है. बेस्ड ऑन व्हाट डिस्टेंस मेजर, बेस्ड ऑन व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है बिटवीन द टू पॉइंट्स. मोर प्रिसाइसली द पार्टीशनिंग ऑफ डेटा सेट्स इनटू सबसेट. ये पूरा एक डेटा सेट है. इफ दिस इज डेटा सेट एक्स, व्हाट हैव वी पार्टीशन इनटू, we have partitioned into x1 and x2 subcategories, subsets. ठीक है, so x is now a collection of x1 and x2 subset or subclusters. So the data in each subset ideally shares some common trait often according to some defined distance measure. Now these share some common trait. ठीक है, based on what distance measure, because these were far away on the plotting. So now we can easily divide them linearly. This is something that is not important. अपन बस cluster form कर लिए, that was important for us. ठीक है, now let's see आगे क्या आता है. Common distance measures. Distance measure will determine how the similarity of two elements is calculated and it will influence the shape of the cluster. इधर देख रहे हो, डिस्टेंस की बेसिस पे अपन क्लस्टर्स फॉर्म किए. तो वो डिस्टेंस मिलता कहाँ से, अपने को पता है ये दो पॉइंट्स हैं. एनी पॉइंट on this page, let's take this point, it will have its own x and y coordinates. ठीक है, ये x है, ये y है, it has its own x and y coordinates, and this, so will this have its own x and y coordinates. now in x and y के बेसिस पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस एस्टैब्लिश हो सकता है. How? These are the methods. Euclidean distance है. ठीक है, we got something called as Euclidean distance. ठीक है, Manhattan distance है. Euclidean distance का भी फॉर्मूला पता है. Manhattan distance का also called taxi-cobb norm और 1 minus norm, ये भी देख लो. Maximum norm भी पता है अपने को, where we take x minus y, x1 minus y1 प्लस y x2 माइनस y2 एंड मॉड करके उसका मैक्स, एंड वी टेक द मैक्सिमम ऑफ इट. मॉड नहीं आता, सॉरी. द Mahalanobis distance corrects data for different scales and correlations in variables. So पहले के तीन तो अपने को पता है, इसमें चेस बोर्ड या चेकर बोर्ड वाला नहीं है, बट पहले के तीन तो अपने को आता है. Now there is something more to it that obviously we have to learn. Mahalanobis. Sorry man, sorry for the pronunciation. I'm damn can't read right now. Mahalanobis distance, inner product shape. The angle between two vectors can be used as a distance measure when clustering high dimensional data. Angle between two vectors.
एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, the angle between them, is this the angle they're talking about? I do not know, we'll see. Hamming distance, sometimes edit distance, measures the minimum number of substitutions required to change one member into another. Wow, take that, what is there? Let's get a good in color. K means clustering. K means clustering. K means algorithm is an algorithm to cluster an object based on attributes into K partitions. It assumes that object attributes from a vector space. Assumes that object attributes form a vector space. Vector space यही हुआ अपना. It assumes that it forms a vector space. K partitions, जितने clusters है, तो इधर K क्या हुआ? K3 हुआ. Because we have 3 clusters. 1, 2, 3. ठीक है. K means clustering. An algorithm for partitioning or clustering n data points into K disjoint subsets. An algorithm for partitioning K into disjoint subsets. 1 S1 plus S2 plus S3 till Sj, containing data points so as to minimize the sum of squares criterion. तो J equals to summation of cluster K, तो कितने clusters उतना J का count होगा, summation n equals to Sj, number of subsets of clusters, xn minus mu j square. ठीक है, where xn is vector representing the nth data point, representing the nth data point, and mu j is the geometric centroid of the data points. Mu j is basically what? Geometric centroid is mean, vector mean actually. nth data point मतलब last value. ठीक है. K means clustering. Simply speaking, K means clustering is an algorithm to classify or to group the objects based on attributes, features into K numbers of groups. K is a positive number. Negative clusters exist नहीं करते भाई, obviously. So K is a positive integer number. The grouping is done by minimizing the sum of squares of distance between data and corresponding clustering center. ठीक है भाई, एक ही point. How the K means clustering algorithm works. There is a start. Number of clusters मिले. This is input. ठीक है. Centroid find किया. Distance objects to centroid. पर एक सेंट्रॉइड मिला तो अपन ने उसके आजू बाजू के हर पॉइंट का डिस्टेंस लिया. अरे ठीक है, अगर डिस्टेंस कम था कंपेयर टू रेस्ट तो एक ग्रुप बन गया. ग्रुपिंग बेस्ड ऑन मिनिमम डिस्टेंस वो कर लिया अपन ने. नो ऑब्जेक्ट मूव ग्रुप, तो ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो मूव ग्रुप, तो ये दिस विल फॉर्म अ न्यू क्लस्टर. नाउ यू लास्ट, अपने को कैसे पता कितना डिस्टेंस देना, दैट देयर विल ऑब्वियसली बी. तो तू जब क्लस्टर्स फॉर्म करेगा ना, बाय टेकिंग मीन, देयर इज अ मेथड टू अप्रोच द होल प्रोसेस. Algorithm. Step 1. Begin. Is this the beginning of a numerical? Let's check that first. If it's a numerical, तो अपन अलग से solve. Okay, this is a numerical. What numerical is this? हाँ, ये तो आता है. This is cluster with 3. Okay. Weakness of K means clustering. When the number of data are weakness of K means clustering is now what we are doing. When the number of data are so many, initially grouping will determine the cluster significantly. When the number of data are not so many, sorry. Weakness of K means clustering. When the number of data are not so many, initial grouping will determine the cluster significantly. The number of cluster K must be determined beforehand. Its disadvantage is that it does not yield the same result. Its disadvantage is that it does not yield the same result within each run, since the resulting cluster depend on initial random assignment. क्या बोल रहा है? Initially,
when the number of data are not so many. 10 ही पॉइंट है. इनिशियल ग्रुपिंग विल डिटरमाइन द क्लस्टर सिग्निफिकेंटली. ठीक है, पहली बार जब ग्रुप होगा ना बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 10-20 पॉइंट है उसमें तुम लोगों ने क्लस्टर फॉर्म कर लिया है. सो यू कैन लिटरली ऐसा सेपरेटिंग 10-20 वैल्यूज फ्रॉम ईच अदर. द नंबर ऑफ क्लस्टर के मस्ट बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड. तो कितने क्लस्टर चाहिए ना वो बोल दो, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए. इट्स disadvantage is that it does not yield the same result with each run, since the resulting clusters depend on initial random assignment. तो जब clustering start होता है ना तो पहले random points assign होता है. So every time you create a cluster का algorithm, when you run the cluster algorithm ना with same k, अगर k का value 2 है तो it is not important कि हर बार cluster same form होगा. If the data is very well separated, then there is a possibility clusters बहुत frequently same ही आएंगे. But usually it is upon the two randomly selected means at the start, जिसकी वजह से clusters अलग अलग आएंगे. We never know the real cluster using the same data. There is no such thing as real clusters, what they are trying to say, using the same data, because if the input is in a different order, it may produce different cluster if the number of data is few. This is when the number of data is few. Okay, data जब बढ़ जाता है ना तब there you have to create proper clusters only, some rationality in that logic. Then it is sensitive to initial condition. That data bada wala logic is what I'm believing in my head. I still do not know if they're referring to the few data or more data points के ऊपर भी same logic apply होता है. It is sensitive to initial condition. Different initial condition may produce different result of clusters. वही different order of the data, mean जो assign किया साथ में, that is responsible for cluster का formation. That may result in a different cluster. The algorithm may be trapped in local optima. The algorithm may be trapped in local optima. So एक ले लिया, उसके आजू बाजू ही घूम रहा है. That is what a local optima is. Application of K-mean cluster. It is relatively efficient and fast. It computes result at 0 TKN, where n is the number of objects or points, k is the number of clusters, and t is the number of iterations. K means clustering can be applied to machine learning or data mining, used on acoustic data in speech understanding, or to convert waveforms into one of k categories, known as vector quantization or image segmentation. Also used for choosing color palettes and on old-fashioned grays, graphical display device, and image quantization. Example. Okay, this is numerical again. Oh, that is done. तो एक बार क्विकली अपन पीपीटी रिवाइज कर लेते हैं. ये डिस्कार्ड कर ले. K means clustering. Introduction. What is clustering? Clustering is basically classification of object, or where we partition the data into subsets so that each subset ideally has some common trait based on the distance measure. Distance measure निकालने के methods है Euclidean, Manhattan maximum norm, and Mahalanobis distance, inner product space, Hamming distance. K means clustering. Yeah. K means algorithm to cluster n objects based on the attributes into k partitions, where k is less than n. बराबर. It assumes that the attributes have form of vector space, मतलब ग्राफ पे प्लॉट हो सकता है. K means clustering algorithm, geometric centroid पे काम करता है. Simply speaking, K means is classify the objects into k is positive integer, ये पता है. ये group algorithm, ये तो numerical था. Weakness of K means cluster. छोटे डेटा सेट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट होता है. Cluster का count must be defined beforehand. We never know what the real cluster is. It is sensitive to initial condition. Algorithm may be trapped in local optima. ये हो गया. Applications of K-mean clustering. It is relatively fast. It works on 0 TKN. K-means clustering can be applied on machine learning or data mining. Used in acoustic data and speech understanding, wave transformation, K category known as vector quantization and image segmentation. Also used in choosing color palettes on old-fashioned grays, graphical display devices, and image quantization. ये easy था. So yeah, अब न्यूमेरिकल्स का वीडियो तो बनेगा. चलो, let's see you.